Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the civil culture, right? Almond and Weber deal with political culture as it is found in 5 different nations: the USA, Britain, West Germany, Italy, and Mexico. They identify the people's orientation towards the political life as basically falling into 3 categories: allegiances, apathy, and alienation. On the basis of these ideas, Almond and Weber put forward their concept of the civil culture. Then, mm, only this early orientation maintained alongside the participant political orientation, but the subject and parochial orientation are congruent with participants political orientation. The concept of civil culture as comprising citizen participation, subject beneficiary, and parochial root is a wholesome one that does away with thinking in terms of traditional, modern, or any other pure type of political culture. The civil culture combines all the characteristics of the 3 ideal type of political culture. It represents a synthesis of directive and acquiescent participant and passive attitude. The former allow the elite to function with sufficient initiative and freedom, while the latter forces those elite to remain subject to popular preferences. According to Almond and Weber, Great Britain and the United States reveals the closest approximation to this civil culture. Civil culture guarantees stable democracy. People feel involved in the affair of government but not too involved in the issue. The decision making power are vested, particularly elite, and the people do not participate directly. Then the civil culture, mediator of democracy, contradiction. The civil culture is a mixed culture. It is a fusion of parochial, subject, and participant culture. The characteristics of the rationality, active model of democratic citizenship often taught in civil classes. The participant role has thus been added to the subject and parochial role, whereby citizens maintain their traditional parochial ties as well as their more passive political role. It is this mixed quality of the civil culture that meditates the contradiction inheritance in democratic system, namely the tension between government power and government responsiveness. First, the parochial foundation in the civil culture, intensively moderation. The parochial and subject orientation modify the intensity of the individual political involvement and activity. This facilitates elite decision making and effective governances. Yet elite must nonetheless be kept in check. In this way, the civil culture accommodates the need for consensus and for leverages. This tension is negotiated and diffused via the inconsistency between participatory norms and participatory behavior. More democratic consolidation emerge from a stabilizing cycle where brief stop of intense political mobilization are followed by prolonged periods of normal politics with minimum citizen participation. In Almond and Weber's own words, this equilibrium mechanism results when an issue becomes silent, activity rises, and balance is restored by the governmental response that reduces the silence in the issue. The civil culture is thus a Goldilocks concept, a means to overcome the fragility of democracy. Yet, intense emotional involvement threatens the balance between activity and passivity, premised on the low silence of political by fostering the sort of mass mechanism movement that lead to democratic instability. Now, moving towards the second point, that is the evidence from the US, Britain, Germany, Mexico, and Italy
To bolster the foregoing theory with empirical data, Almond and Verba conducted a cross-national survey across 5 countries. See, to booster the foregoing theory with empirical data, Almond and Verba ने क्या किया? They have conducted a national survey, cross-national survey across 5 countries. That is the United States, Britain, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको. उन्होंने सर्वे किया इन 5 कंट्रीज में. अप्रॉक्सीमेटली 1000 mostly structured interviews were conducted in each country between 1959 and 1960. See, approximately क्या हुआ है? 1000 mostly 1000 इंटरव्यू लिए गए थे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कंडक्टेड इन ईच कंट्री. दैट वाज बिटवीन 1959 and 1960. Across a variety of measures, the survey find that the USA and Britain, most approximately the civil culture, German and Mexico produced mixed result, and Italy is in big trouble. See, across a variety of measures क्या है? सर्वे में क्या पता चला? यूएस एंड ब्रिटेन में क्या है? सिविल कल्चर है. जर्मन और मैक्सिको में क्या है? दे हैव अ मिक्स्ड रिजल्ट. और इटली में क्या है? इटली एक बहुत बड़ी मुसीबत में है. इटली क्या है? इटली इज इन बिग ट्रबल. द मेन एम्पिरिकल रेगुलेटरीज that emerges across all 5 countries is that the more educated have higher level of subjective competency. See, the main empirical regularities. See, मेन एम्पेरिकल रेगुलेटरीज क्या है जो आई? इट वॉज क्या है? अक्रॉस 5 कंट्रीज दैट जितना ज़्यादा एडुकेशन है उतना ही हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी है, मतलब उतनी ही हाई लेवल की सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी है. दे फील एबल टू डू समथिंग अबाउट अ local regulation that they consider just. See, what they do? They feel better able to do something about local regulation that they consider unjust, that is to affect government decision making. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? It is affecting the government decision making over here. This is particularly true vice versa local as opposed to national government. See, ये this is क्या है? This is particularly true. क्यों? क्योंकि लोकल एज इट इज़ अपोज टू नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल एंड एज वेल एज गवर्नमेंट. मेन एंड हाई स्टेटस इंडिविजुअल आर ऑल्सो लाइकली टू होल्ड हायर लेवल ऑफ सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी. सी, मेन एंड हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स. वॉट? men and high status individual, what are they? They are likely to hold higher level of subjective competency. See, they likely to hold the higher level of subjective competency. Yet the survey mainly highlights divergency across 5 countries. See, ये सर्वे में क्या है? अलग अलग 5 कंट्रीज़ के बारे में बोला है. In the success cases, the USA and Britain, we find the characteristics civil culture gap between participatory perception and reality. See, अपने को क्या है? अपने को सिविल कल्चर में गैप दिखता है बिटवीन द पार्टिसिपेटरी परसेप्शन एंड द रियलिटी. सॉरी, हाँ. See, where we were. Response in Britain and the United States manifested high frequency of what it had called subjective political competency. See, respondents in Britain and United States, what they did? They manifested high frequency of what we call subjective political competency. Yet this high estimation of one competency as an influential citizen is certainly not matched by एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर. सी, फिर ये जो कॉम्पिटेंसी था क्या है? ये एक्चुअल बिहेवियर के साथ मैच नहीं हुआ. फर्दर, इन बोथ कंट्रीज कलेक्टिव एक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. सी, फिर क्या है? दोनों कंट्री में क्या है? कलेक्टिव एक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. सिटीजन्स आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू रिपेल ऑन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग. सी, सिटीज़न क्या है? सिटीज़न आर कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी. सिटीज़न को क्या एक कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास बहुत एबिलिटी है, फिर वी कैन हैव अ फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप सो दैट वी कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग.
By contrast, in German, Italy and Mexico, social interpersonal trust level are lower and any such solidarity rarely penetrate into political relationship. See, by contrast क्या है, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको में क्या है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट लेवल है, कम है, और इसी वजह से क्या है, दे रेयरली इंटरफियर इन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप. Therefore, citizen ability to influence the government in time of need, in particular to create a ad hoc political structure, to do so is limited. See, therefore क्या है, सिटीजन्स एबिलिटी, सिटीज़न की एबिलिटी कि वो गवर्नमेंट को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है एक टाइम में और एक नीड में इन पर्टिकुलर, सो दैट वी कैन ऐड हैवॉक टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टू डू सो दैट अपन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर सकें. वो भी क्या है, इट इज़ ओनली लिमिटेड. दिस जनरेट्स अ डिस्टेबलाइजिंग इन कॉन्ग्रुएंस विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से. ये क्या है, दिस जनरेट्स अ destabilizing incongruency with democratic institutions. Mexico presents a case of aspirational political orientation where the level of subjective political competency is rarely high but is unmatched by performance. See, मैक्सिको में प्रेजेंट क्या है, मैक्सिको में एक केस ऐसा आया है एस्पिरेशन का जहाँ पे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, लेवल ऑफ सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी क्या है, इट इज़ रिलेटिवली हाई, बट क्या है, इट इज़ अनमैच्ड बाय द परफॉर्मेंस, वो उस परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं होता. दिस गैप बिटवीन perceived ability to influence the government and actual experiment with such influence is also a feature of the civil culture, but the gap in Mexico is much wider than the United States and Britain. See, this gap between perceived ability, see ये जो gap है between perceived ability so that we can influence the government and actual experiences with such influence क्या है, it is the feature of the civil culture. But मैक्सिको में क्या था, मैक्सिको में बहुत ज़्यादा अलग था. अगर आप कंपेयर करोगे तो विथ यूनाइटेड स्टेट एंड ब्रिटेन के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था सिविल कल्चर में मैक्सिको के. इन इटली एंड जर्मन कमिटमेंट टू द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ लार्जली pragmatic and is based on little emotional commitment. See, in Italy and German क्या है, commitment to the political system क्या है, it is largely pragmatic. पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, मतलब इमोशनली है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल कमिटमेंट इन व्हाट सेंस कि बाबा आज मैंने बोला है ऐसा करना है तो ऐसा करना है, लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा काम हो रहा था वहाँ पे. द legacy of authoritarian rule in German produced a political culture whereby the passive subject orientation persists and has yet not been balanced by a participation orientation. See, the legacy of authoritarian rule क्या है, in German it came up with some political culture और जो passive subject orientation persists and it has not been balanced by a participant orientation. The situation is मोर डायर इन इटली. अब इटली में तो सिचुएशन और ज़्यादा अलग है. इटली में सिचुएशन और अलग क्या है, विच नेवर रियली डेवलप्ड एन एलिगेंट नेशनल पॉलिटिकल कल्चर इन मॉडर्न टाइम्स. सी, यहाँ पे क्या है, इट नेवर डेवलप्ड अ नेशनल पॉलिटिकल कल्चर इन मॉडर्न टाइम्स एंड वेयर सिटीजन्स आर thoroughly alienated both as participant and as subject. और जहाँ पे सिटीजन क्या है, दोनों भी alienated है, both as a participant and as a subject. Unsurprisingly, survey results in both countries find that most respondents believe voting exhausts their participatory responsibilities. See, अभी अनसरप्राइजिंगली क्या है, जो सर्वे के रिजल्ट आए बोथ कंट्रीज में, उससे क्या है, रिस्पोंडेंट व्हाट दे डू, दे बिलीव वोटिंग एग्जॉस्टेड देयर पार्टिसिपेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पार्ट ऑफ द foregoing divergency may be attributable to political structure. For example, the US and Britain is characterized by substantially local government autonomy and opportunity for local participation
whereas German, Mexico, and particularly Italy minimized local autonomy and restricted opportunities for community involvement. See, part of the foregoing divergency क्या है, they have attributed to political structure. Example उन्होंने दिया है US and Britain, they are characterized by sustainably local government autonomy and they have some opportunity for local participation. Whereas क्या है, German, Mexico and particularly Italy, they minimize local autonomy and restrict opportunities for community involvement. And what they do, they restrict opportunities for community involvement. Nevertheless, self-reinforcing feedback processes between political culture and political structure produce a chicken and egg. See, अभी nevertheless self-reinforcing, उसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, feedback process है. It is between political culture and the political structure. What it does, it produces a chicken and egg endogeneity problem that is difficult to discernible. See, which is difficult to discernible. The difficulty diffusion of the civil culture. See, अभी जो difficulty diffusion of the civil culture क्या है, that is the third point. Okay, the problem with cultural variable are opposed to institutionally ones is that the former do not easily lend them to engineering. See, the problem with cultural variables क्या है, as opposed to institutional ones is क्या है, ये क्या है, they are not easily lent by the engineers. Indeed, the civil culture is transmitted to a complex socialization process. ये जो civil culture है, it is transmitted to a complex socialization process that include training in many social institution. उसमें क्या include हो रहा है, we are providing proper training in many social institution like family, peer group, school, workplace as well as in the political system itself. See, we are providing here training in social institution. उसके अंदर क्या include हो रहा है, family include होता है, peer group, school, workplace as well as in the political system itself. It is bolstered by direct exposure to the civil culture. See, यहाँ पे क्या हो रहा है, civil culture को एक direct exposure मिल रहा है, right, and to the democratic polity, और साथ साथ में democratic polity and its acceptance by individual is often part of an internal generational transfer of value. See, it is bolstered by direct exposure to the civil culture and to the democratic polity and its acceptance by individual क्या है, it is an important part of the intergenerational transfer of values. Finally, the US and Britain, the civil culture merged only gradually and organically within a relatively stable socio-political context. See, फाइनली क्या है, यूएस एंड ब्रिटेन ने क्या किया, दे केम अप विथ सिविल कल्चर विच गॉट ओरिजिनली विद इन अ स्टेबल सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट. For this reason, Alman and Weber are not optimistic about the prospect of diffusing the civil culture to new democracies. See, इसी रीज़न की वजह से क्या है, ये आलमंड एंड वेबा क्या है, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक. They are not optimistic about the prospect of diffusing the civil culture to new dimension. The problem in the new nation of the world is that such gradualness is not possible. The problem क्या है इसमें, तो एक problem क्या है in the new nation of the world is that कि बाबा gradualness क्या है, it is not possible. There is great demand for participation in politics from many who were only reluctantly parochial. सी, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है पार्टिसिपेशन के लिए इन पॉलिटिक्स में फ्रॉम मैनी हु वेर ओनली रिसेंटली पैरोचियल. प्रमोटिंग एडुकेशन मे बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. सी, एडुकेशन प्रमोट करना ये सबसे अच्छी शुरुआत रहेगी, राइट, बट एडुकेशन कैन ओनली क्रिएट सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिविल कल्चर. सी, एडुकेशन से अपन अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एडुकेशन सब कुछ देगा क्या आपको, नहीं. एडुकेशन क्या सब देगा, सिर्फ इट कैन गिव अ कंपोनेंट ऑफ द सिविल कल्चर.
it can only create some of the component of the civil culture. Some means of inculcating loyalty to the political system. Some means क्या है, सम जब बात कर रहे हैं तो सम यानी क्या है, लॉयल्टी, थोड़ी बहुत ही लॉयल्टी मिलती है टू द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू एन यूनिफाइंग शेयर्ड एक्सपीरियंस और द एक्शन ऑफ चेरिस्मेटिक लीडर. ये कैसे होगा, सबके आप एक्सपीरियंस सुनेंगे, हाँ, वो एक्सपीरियंस से होगा, या फिर जो चेरिस्मेटिक लीडर है, मतलब जिन्होंने एक्शन अच्छे से काम वगैरह किया है, चेरिस्मेटिक लीडर है, उनके थ्रू. मे बी coupled with the profusion of modernizing the participatory institution, namely the mass media, political parties and voluntary civil organization. See, it can be क्या है, coupled with the profusion of modernizing and participatory institution, namely the mass media, political parties and voluntary civil organization. Yet, although many approach to modernization has within it some of the seeds of the civil culture, a ready-made formulation for creating the civil culture is non-existent. See, yet although क्या है, बहुत से अप्रोच है टू मॉडर्नाइजेशन के लिए, क्या, जिसके सीड्स अपन क्या देखते हैं, सिविल कल्चर में देखते हैं, एंड ऑल दिस आर रेडीमेड फॉर्मुलेटेड फॉर क्रिएटिंग द सिविल कल्चर इज नॉन एग्जिस्टेंस. देन सेक्युलर पॉलिटिकल कल्चर. When people are secular in their outlook, there is a participation in the decision making process by most of the individual. It is worked as a rational process. See, जब when people are secular in their outlook, what they do, वहाँ पे participation in the decision making process क्या होता है, by most of the individual, it is like working as a rational process. The traditional attitude are changed voluntarily. अभी उनका जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड रहता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है वॉलेंट्रीली बाय द वे ऑफ डायनामिक एंड सब्सटेंशियल डिसीजन. और वो भी कैसे चेंज होता है, बाय द वे ऑफ डायनामिक तरीके से एंड डिसीजन से, सब्सटेंशियल डिसीजन से. आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकल कल्चर. दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वेयर पीपल आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड इन द फेवर ऑफ डिटरमाइंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. सी, ये एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पे अपन लोगों को गाइड करते हैं एंड वी कंट्रोल देम इन फेवर ऑफ आवर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. मतलब जो अपन ने पॉलिटिकल ओरिएंटेशन डिटरमाइन किया है, उनको लोगों को उस हिसाब से गाइड करना है, उस हिसाब से कंट्रोल करना है. विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, कंट्रोल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, the orientation that are desired to be developed are sought in the political system. See, with the help of the education system, we can control the political socialization, the orientation that are desired to be developed are sought to be in political system. Then the G point is the homogeneous political culture. When the political system has been categorized and characterized by the same rule, values, belief, that are when such a political system is called homogeneous political culture. सी, जब अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, अपन कैटेगराइज करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं बाय सम वैल्यू, बिलीव्स एंड रूल्स, देन व्हाट वी से दैट ये जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इट इज़ होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर. उसको अपन बोल रहे हैं होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर. Although this political system may have different parties and subgroups, they share common belief, ideas and culture. See, अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत से अलग अलग पार्टीज़ है, उसमें भी सब ग्रुप्स है एंड ऑल है, सब अलग अलग है, ग्रुप है सब, फिर भी उनके क्या है, दे हैव सम कॉमन बिलीफ, आइडियाज़ एंड कल्चर. जैसे अपने यहाँ पे इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बट उनका एक क्या है, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे वांट टू रूल द कंट्री, they want to have some power. Then next is the fragmented political culture. When everything in the political system is different, including individual people, their ideologies and beliefs, it called fragmented political culture. See, when everything in the political system क्या है, ये different रहता है, including individual people, their ideologies and belief, it called fragmented political culture. It is seen that there are various pattern of cultural development. अपने को क्या दिखता है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न है कल्चरल डेवलपमेंट के.
See, we have winded our third topic over here. In next lecture, we'll start with the fourth topic, that is the political socialization. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.